Hi everyone, welcome to my channel Think with Lakshmi. So ajira class take class 11 NCERT biology chapter 8 cell the unit of life ru hi start kariba. Class टी mainly NEET OUT and also TGT पिला मानक ପାଇଁ ମଧ୍ୟ important ରହିବ. So चलंतु start करिबा. First आमे देखिबा cell रो introduction and structure of prokaryotic cell. Then cell organelles रहिबो second part रे एटा टिके lengthy रहिबो. Then cell cycle and cell division third part रे. Last रे मु आ गोटे चैप्टर भी ऐड करिछि एथिरे DNA and RNA एटा भी आसे तो कंटिन्यू ही करिबा. Then introduction and prokaryotic cell टा मोर फर्स्ट पार्ट रे रखिबा. So cell, what is cell? First thing, what is cell? Cell कौन है? Cell comes from a Latin word cella. Which means cella or cellula, which means small compartment. स्मॉल कंपार्टमेंट मीन्स जमती गोटे हाउस बनया को हेले हमको ब्रिक्स को जॉइंट करी रखे को पड़े गोटे वाल बनया पे सो सेल लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट से सेल को मध्य आ कौन कह जाए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आम कहीपर. देन अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. First thing, it is known as basic building block of living organism. And then it is otherwise known as fundamental and structural unit of life. जो मैंने भी नोट करने चाहूथे तो ये नोट भी करें. Functional unit of life बोली कहीपर. Then cell structure only seen under electron microscope. It can be only seen under electron microscope. Cell structure देखिबा जदि आमे only seen under electron microscope. नाम आसवा सेल को डिस्कवर किए करथिले. सेल को डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक इन 1665. से प्रथम डेड सेल को लेकिन देखी. सो ही वाज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी. तो मैं लिखि परबा फर्स्ट ही ऑब्जर्व डेड सेल एंड ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. जस्ट लिखि कथरा रॉबर्ट हुक एंड इन 1665 रे करथिले से फादर ऑफ साइटोलॉजी बोली कहा जाए तुमको. साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल. सो नेक्स्ट आमर आसला लिविंग सेल. सो लिविंग सेल किए डिस्कवर करथिले? लिविंग सेल डिस्कवर करथिले एंटन भन लीवेनहुक.
डेड सेल तो मन रखा डेड सेल की डिस्कवर करते रॉबर्ट हुक डिस्कवर करते इन 1665 रे एंड लिविंग सेल की डिस्कवर करते लिविंगस्टन करते एंटन भन लिवेनहुक देन आसला लिविंग सेल आम केत कहवा जो प्रोटोप्लाजम थी सो प्रोटोप्लाजम ये आउ गोटे बड़ टर्म आसची तो ये प्रोटोप्लाजम को किए ऑब्जर्व करते कट्टी लिख प्रोटोप्लाजम वाज ऑब्जर्व बाय कट्टी सो प्रोटोप्लाजम को किए ऑब्जर्व करते कट्टी करते देन द टर्म प्रोटोप्लाजम वाज कॉइन्ड बाय तो ये नाटा को किए देते नाटा को देते पुरकिनजी तो लिखिदबा द प्रोटोप्लाजम कॉइन्ड बाय पुरकिनजी ओके देन आउ जड़े पर्सन आसिले से प्रोटोप्लाजम फंक्शन को ऑब्जर्व करके कहले इट वाज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सो प्रोटोप्लाजम को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किए कहते हग्सले मन रखा हग्सले कौन कहते इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सो प्रोटोप्लाजम को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोल किए कहते हग्सले कहते सेल थ्योरी किए देते इन 1838 माठिया स्लाइडेन जे कि थे जर्मन बटानिस्ट से प्लांट सेल उपर सेल थ्योरी देते एंड ही ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ही कंक्लूड दैट एवरी प्लांट मेड अप ऑफ अ सेल ओके सो माठिया स्लाइडेन फर्स्ट जर्मन बटानिस्ट थे से प्लांट सेल उपर सेल थ्योरी देते देन तांको परे ठीक गोटे वर्ष पर इन 1839 रे आसला आमर किए ना थियोडोर स्वार जे कि थे जर्मन रो जूलोजिस्ट बहुत जगह ब्रिटिश रो जूलोजिस्ट बोली मेंशन अच्छे बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही वाज द जर्मन जूलोजिस्ट थे से सो थियोडोर स्वान आसला आमर 1839 रे से एनिमल सेल उपर सेल थ्योरी देथिले लिखिले जर्मन रो जूलोजिस्ट ओके से एनिमल सेल उपर सेल थ्योरी देथिले देन हाइपोथेसिस भी देथिले थियोडोर स्वान व्हाट इज हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सो से कौन कहथिले हाइपोथेसिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and their product okay then से आउ कौन ऑब्जर्व करते प्लांट रो गोटे यूनिक फीचर ऑब्जर्व करते जे सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट जोटा कि एब्सेंट अच्छे एनिमल सेल ओके से सेल वॉल को फर्स्ट कौन करते ऑब्जर्व करते इन प्लांट सेल रे सेल वॉल वाज ऑब्जर्व बाय थियोडोर स्वान ओके सेल वॉल को से ऑब्जर्व करते एंड कहते कि इट इज द यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल ओके नेक्स्ट आसवा आम को मॉडिफाई किए करते तो सेल थ्योरी तो इन 1838 माठिया स्लाइडेन देते प्लांट सेल पर देन 1839 थियोडोर स्वान आसते एनिमल सेल पर सेल थ्योरी देले देन पर सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते रुडोल्फ विर्चो ओके सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855 से केबा आसले इन 1855 रे से सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते सो आम लिखिपर सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो ओके इन 1855 रे से करथिले
and he was first explained that cell divided and new cells are formed. Cell divided and new cells are formed. ओके तांको लैंग्वेज से आउ गोटे स्टेटमेंट भी देथिले ओमनी सेलुला इज सेलुला दैट मीन्स ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल ओके ओमनी सेलुला इज सेलुला से कहिथिले दैट मीन्स ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल गोटे सेल तार पेरेंट सेल रु अराइज होइथे बोली से कहिथिले pre-existing cell okay तो सेल थ्योरी रे मेन कौन कौन रहा ना से कही कि ऑल आमर जोटा एक कनक्लूड थे लास्ट रे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज पास टू डॉटर सेल जो जेनेटिक मटेरियल थे से डॉटर सेल को ही ट्रांसफर होता है एंड आउ गोटे भी इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस आर ऑफकोर्स इनसाइड द सेल बोल कि सेल थ्योरी रे कह जाइथिला सो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस आर एटा इंपोर्टाट अच्छी टिके नोट करदेवा all metabolic process occurs inside the cell okay so एटा थिला हमर सेल थ्योरी नेक्स्ट टाइम जिबा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सेल किछि इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सेल पढ़िबा हमें कौन कौन सेटा रीडिंग करबा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट related to cell okay कौन important fact ना which is the smallest living cell which is the largest living cell and कोटा longest cell कोटा largest unicellular algae कोटा सेटा में लिखिबा बे okay smallest सबुठु smallest living cell के mycoplasma okay माइकोप्लाज्मा बा पीपीएलओ भी कहा जाए पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जार साइज मेनली 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा आमर थाए एंड पीपीएलओ रो 0.1 माइक्रोमीटर ओके देन आसीबा लार्जेस्ट सेल की लार्जेस्ट सेल नोट करो लार्जेस्ट सेल होची ऑस्ट्रिच एग एटा बेसिकली समस्त जानी छंती ostrich egg okay the longest cell what is the longest cell nerve cell nerve cell then asila amara largest unicellular algae तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर algae किए एसिटाबुलारिया मन रखियो समस्ते लार्जेस्ट यूनिसेलुलर algae किए हमर एसिटाबुलारिया ओके आउ थे देख दवा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा बा पीपीएलओ बोली कहा जाए देन लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग लॉन्गेस्ट सेल हमर नर्व सेल एंड लार्जेस्ट यूनिसेलुलर आज होची एसिटाबुलारिया एटी के समस्त मन रखिथिबो देन आम नेक्स्ट पार्ट रे पढ़िबा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल ओके सो आज क्लास रे जहाँ भी पढ़ाला एटा के प्रैक्टिस करदबा देन नेक्स्ट क्लास रे आम किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी नेके आसीबा सो थैंक यू